Hello everyone, welcome to this class. आज आमे एही क्लास रे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो 200 important MCQs प्रैक्टिस करिवा फॉर योर एग्जाम SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क पे बहुत हेल्पफुल हो। आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रू डाउनलोड करि परिबे। ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1। Who was the first European to reach India by sea at the Cape of Good Hope? Which option is your right answer? प्रथम यूरोपियन समुद्र पथ देई जे भारत को पहुंचथिले से होचंती वास्को डा गामा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, वास्को डा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डा गामा रीच्ड कालीकट इन व्हिच ईयर? वास्को डा गामा प्रथमे कालीकट रे पहुंचथिले केउ मसिया रे? 1498 रे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 1498 रे से कालीकट रे पहुंचथिले। नेक्स्ट, the first Portuguese governor in India was कहंतु भारत रे प्रथम पोर्तुगीज गवर्नर किए थिले? फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी आल्मेडा मन रखंतु। नेक्स्ट, who introduced the blue water policy? ब्लू वाटर पॉलिसी को किए इंट्रोड्यूस करथिले? ब्लू वाटर पॉलिसी नील जल नीति को किए इंट्रोड्यूस करथिले? आल्मेडा। Almeida is your right answer. Option B is your right answer. Next try करंतु। Goa was captured by the Portuguese in केउ मसिया रे पोर्तुगीज मानक द्वारा गोवा को अधिकृत करा जायतिला? 1510 रे। ऑप्शन सी मन रखंतु 1510 रे गोवा को पोर्तुगीज माने अधिकृत करिथिले। नेक्स्ट, the English East India Company received its charter in इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केउ वर्ष निजर जो चार्टर पाइथिला अर्थात गोटे जो अधिकार पत्र पाइथिला 1600 रे? 1600 इज राइट आंसर, 1600 मसिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट? भारत रे इंग्राजी माने सेमानकर प्रथम कारखाना को केउठारे स्थापन करथिले? फर्स्ट फैक्ट्री को सूरत रे। केउठारे? सूरत इज राइट आंसर। ऑप्शन ए गुजरात रो सूरत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ? सर थॉमस रो केउ राजांकर दरबार को से गस्त करथिले? जहांगीर को कोर्ट को से विजिट करिथिले? ऑप्शन सी। ठीक अछि, मुगल सम्राट जहांगीर को दरबार को राजदूत भाबरे से गस्त करिथिले। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन कहंतु प्लासी युद्ध केउ मसे रहितला? 1757 रे बैटल ऑफ प्लासी होइतिला? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला को मध्य रहितला? रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को परास्त करिवे। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला was defeated by? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा कौन हबे? रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव को द्वारा परास्त हबे क्यों युद्ध रे? बैटल ऑफ प्लासी रे। ठीक अछि, प्लासी युद्ध रे। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन कहंतु केउ मसिया रे बक्सर युद्ध होइतिला? 1764 मसिया रे बक्सर युद्ध होइतिला। बैटल ऑफ बक्सर कहा मध्य रहितिला? ए युद्धटी कहा मध्य रहितिला आपण कमेंट सेक्शन रे कहबे। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइंड इन? अलाहाबाद संधि केउ वर्ष स्वाक्षरित होई? अलाहाबाद संधि केउ वर्ष स्वाक्षरित होइतिला कहंतु? 1765 मसिया। ऑप्शन बी होइज फॉर राइट आंसर। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765। नेक्स्ट, दिवानी राइट्स ऑफ बेंगल, बिहार एंड ओडिशा was granted to the East India Company by? कहा द्वारा? बंगला, बिहार एवं ओडिशा रो जो दीवानी अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को किए प्रदान करथिले? शाह आलम टू मुगल सम्राट शाह आलम टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कहंतु बंगरे अर्थात बंगला रे जो आपनकर द्वैत शासन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को किए प्रवर्तन करथिले? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
रॉबर्ट क्लाइव याकू प्रवर्तन करथिले। नेक्स्ट द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन केउ मसिया रे रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करा जायतिला 1773 मसिया रे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग होचंदी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन केउ मसिया रे पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करा जायतिला 1784 मसिया रे। 1784 is your right answer. Next, the permanent settlement was introduced in permanent स्थायी बंदोबस्त permanent settlement स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को केउ मसिया रे लागू करा जायतिला 1793 रे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 1793 रे को लागू करा जायतिला। देन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय याको किए इंट्रोड्यूस करथिले कोंतु परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी होइज योर राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोंतु सब्सिडियरी अलायंस को लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी होइज योर राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली याको इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रो कथा कहबा लॉर्ड डेलहाउसी याको इंट्रोड्यूस करथिले। ऑप्शन सी होइज योर राइट आंसर लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट व्हिच स्टेट एनेक्स्ड फर्स्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोंतु केउ शहर को केउ राज्य को प्रथम थर पई एही नीति अधीन रे अंतर्भुक्त करा जायतिला ता थिला केउ राज्य झांसी नागपुर सातारा हिजबो कि और अवध सातारा आई थिंक एटी आपण देखिबे सातारा की। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन यहाँ परे परे झांसी नागपुर इत्यादि राज्य को अंतर्भुक्त करा गला। नेक्स्ट द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन केउ मसिया रे विडो रीमैरेज एक्ट को पास करा जायतिला 1856 मसिया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 1856 मसिया। नेक्स्ट हु एबॉलिश्ड सती इन 1829 रे 1829 मसिया रे सती प्रथा को ये उच्छेद करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी मन रखंतु लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट ब्रोक आउट एट 1857 मसियार विद्रोह प्रथमे केउठारु आरंभ होइतिला एहा प्रथमे मीरठ रु प्रथमे आरंभ होइतिला। ठीक अछि मीरठ इज योर राइट आंसर सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी सिपाही विद्रोह नाम रे जणा जाय। सिपाही म्यूटिनी भी हबो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मध्य कहि परिबा एंड एटा गोटे सिविल रिबेलियन मध्य थिला। ठीक अछि इट मींस ऑप्शन डी को चूज करिबा सब गुडा कहि परिबो अन्य नाम गुडा को। नेक्स्ट द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर वाज डिपोज्ड एंड डिपोर्टेड टू कोंतु शेष मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को केउ ठाकू तांको जो माने कोन करा जायतिला देशांतरित करा जायतिला सही सेंस रे रेंगुन को। ठीक अछि रेंगुन को मन रखंतु ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द प्रोक्लामेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया's assumption of the government of India was made in रानी विक्टोरियांकर शासन को जो ग्रहण परिवार जो विषयटा जो घोषणा पत्रटा जो वर्ष यह ग्रहण करा जायतिला 1858 रे 1858 रे ठीक अछि विद्रोह परे परे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम सेतेबेले कोन हला 1858 रे कंपनी ठारू कोन हेगला सेटा क्राउन हाथ को चली गला। तो ऑप्शन ए होइज राइट आंसर द कंपनी टू द क्राउन। नेक्स्ट
First Viceroy of India was कुहतु भारतर प्रथम Viceroy Lord Canning. Option A हब right answer. Lord Canning मन रखंतु. Next, the Indian Council Act of 1861 was passed during the time of 1861 मसीह लॉर्ड कैनिंग को समय ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पारित करा जायतिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. The Indian Council Act 1892 was passed during the Viceroy सेतेबेले किए थिले 1892 रे. Which option is your right answer? Option A, Lord Lansdowne ही थिले सेतेबेलर Viceroy. Next, the partition of Bengal took place in बंग विभाजन केउ मसिया होइतिला 1905 मसिया. Option B is your right answer. बंग विभाजन 1905 मसिया. The partition of Bengal was announced by Lord Curzon को द्वारा बंग को विभाजन करागला. Next, the Swadeshi movement started mainly as a protest against Swadeshi movement को आरंभ करागला बंग विभाजन को नहीं. So the partition of Bengal. Next, the Muslim League was founded in कुहतु मुस्लिम लीग को केउ वर्ष प्रतिष्ठा करा जायतिला 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग रो प्रतिष्ठा हेबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, the first session of Muslim League was held at मुस्लिम लीग रो प्रथम सेशन केउठारे होइतिला ढाका रे होइतिला बांग्लादेश रो जो ढाका. नेक्स्ट, the first president of Muslim League was कुहतु मुस्लिम लीग रो प्रथम प्रेसिडेंट के थिले आगा खान थिले. ऑप्शन B is your right answer. Next, the Indian National Congress was founded in Indian National Congress 1885 मसिया रे प्रतिष्ठा करा जायतिला. ऑप्शन B is your right answer. Next, the first session of the Indian National Congress was held at Bombay ठारे होइतिला केउठारे Bombay is your right answer. Then the first president of the Indian National Congress was उमेश चंद्र बनर्जी होचंती यार प्रथम प्रेसिडेंट. Next, A.O. Hume, the founder of the Indian National Congress was a से जने कौन थिले A.O. Hume जने कौन थिले British civil servant थिले. Option A is your right answer. Next, the moderate phase of the Indian National Congress was formed. Try करंतु question number 43. 1885 रु 1905 1885 रु 1905 मसिया हिजो राइट आंसर. अछि कांग्रेस रो जो माने प्राधान्यता थिला सेमानकर जो दाबी पूरण पई विभिन्न प्रकार सब सिस्टमैटिक प्रोविजन को सेमाने फॉलो करूथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. The extremist phase of the Indian National Congress began with कोंतु extremist माने जेतेबेले चरमपंथी बंग जेतेबेले विभाजन हेजिबो सेतेबेले चरमपंथी माने सेमानको भितरे आसी जिवे. ठीक अछि चरमपंथी मानकर प्राधान्य वृद्धि पाई जिवो. तो ऑप्शन ए the partition of Bengal we can say. Next, the Surat split of Indian National Congress took place in कोंतु Surat split केउ मसिया रहितला 1907 मसिया रे सुराट विभाजन सुराट स्प्लिट. ठीक अछि एठारु आपनकर चरमपंथी नरमपंथी रो कथा कहै जिवो. देखंतु the Surat split was caused by the difference between चरमपंथी एवं जो नरमपंथी रो कथा. So moderate and radicals. Option A is your right answer. Next, the Lucknow Pact between Congress and Muslim League was signed in कोंतु लखनऊ चुक्ति को केउ मसिया रे स्वाक्षरित करा दितला 1916 मसिया 1916 मसिया रे लखनऊ चुक्ति को स्वाक्षरित करा दितला. नेक्स्ट, the Lucknow Pact is significant because कोंतु लखनऊ चुक्ति अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कारण Lucknow Pact is significant because which option is your right answer? Option B, brought unity between Congress and Muslim League is your right answer. Option B is your right answer. Next, the Home Rule movement was launched by कोंतु
होम रूल आंदोलन को किए आरंभ करथिले मन रखंतु आनी बेसंत एंड बाल गंगाधर तिलक एही आंदोलन को आरंभ करथिले ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट द होम रूल लीग ऑफ एनी बेसंत वाज फाउंडेड इन क्यों मसिया रे आनी बेसंत होम रूल लीग क्यों वर्ष प्रतिष्ठा होइतिला आनी बेसंतंकर जो 1916 मसिया ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 1916 देन द रोलैट एक्ट वाज पास्ड इन रोलैट एक्ट क्यों मसिया रे पास हेतिला 1919 मसिया रे बिना वारंट रे अरेस्ट करा जिवो रोलैट एक्ट नेक्स्ट ट्राई करंतु द रोलैट एक्ट इज आल्सो नोन एज कोन हिजबो एटा रोलैट एक्ट एटा को ब्लैक एक्ट मध्य कुआ जाउथुला ओके एंड anarchical and गोटे रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट मध्य कुआ जाउथुला सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट जालियाना वाला बाग मास्कर टुक प्लेस इन जालियाना वाला बाग हत्याकांड 13 एप्रिल 1919 मसिया होइतिला ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 13 एप्रिल 1919 नेक्स्ट द जालियाना वाला बाग मास्कर अकर्ड इन क्यों ठारे होइतिला एटा क्यों ठारे अमृतसर ठारे पंजाब रो अमृतसर ठारे होइतिला नेक्स्ट हु ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जालियाना वाला बाग कोन के निर्देश देथिले जनरल डायर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर जनरल डायर को निर्देश क्रमे फायरिंग करा जायतिला नेक्स्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन असहयोग आंदोलन 1920 मसिया रे असहयोग आंदोलन होइतिला द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल अप आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा रे जेतेबेले थाना ऊपर जेतेबेले अटैक हबो पुलिस कर्मचारी जेतेबेले मृत्यु हबो देन याकू प्रत्याहार करा जायतिला द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर इन कोन चौरी चौरा क्यों मसिया रे होइतिला चौरी चौरा आंदोलन 1922 मसिया रे होइतिला 1922 मसिया रे चौरी चौरा ठारे चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश चौरी चौरा आपनकर उत्तर प्रदेश रे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज चौरी चौरा जो वायलेंस जो चौरी चौरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना रही द साइमन कमिशन वाज अपॉइंटेड इन इट को गला साइमन कमिशन को अपॉइंट 1928 रे से भारत आसिले 1927 रे तांको अपॉइंट करा गला द साइमन कमिशन वाज बॉयकॉट बिकॉज काहे की बॉयकॉट करा गला बिकॉज इथरे नो इंडियन मेंबर इट हैड नो इंडियन मेंबर जो द साइमन कमिशन अराइव्ड इन इंडिया 1928 मसिया रे से भारत आसी साइमन कमिशन 1928 मसिया रे भारत आस्तिले नेक्स्ट द स्लोगन साइमन गो बैक वाज रेज्ड बाय ए स्लोगन कहा द्वारा दिया जाइतला भारतीय जातीय कांग्रेस द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द राइट आंसर द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन नेहरू रिपोर्ट को 1928 मसिया रे प्रस्तुत करा जाइतला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द नेहरू रिपोर्ट वाज चेयर्ड बाय के हिजबो मोतीलाल नेहरू ठीक अछि मोतीलाल नेहरू ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज रो कथा कुआ गला एंड इट्स सेशन हेल्ड एट क्यों सेशन रे दिस इज आपनकर लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज डिमांड और रिजोल्यूशन को पास करा गला द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन ए सेशन टी आपनकर 1929 मसिया रे होइतिला लाहौर थारे नेक्स्ट द लाहौर सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय लाहौर सेशन रो अध्यक्षता किए करथिले जवाहरलाल नेहरू यार अध्यक्षता करथिले द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज मेड ऑन कोंतु पूर्ण स्वराज को घोषणा करा दितला 26 जनवरी 1930 मसिया ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन कोंतु सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन 1930 मसिया ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह वाज अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी इन 1930 मसिया रे ही दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह लवण सत्याग्रह आरंभ करा जायतिला द दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड
साबरमती आश्रम रु दांडी पर्यंत ठीक अछि ऑप्शन ए होई जो राइट आंसर नेक्स्ट द सॉल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट का अगेंस्ट रे ब्रिटिश जो सॉल्ट मोनोपोली अगेंस्ट रे ऑप्शन ए होई जो राइट आंसर द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली नेक्स्ट द दांडी मार्च covered a distance of approximately एटा आपनकर 240 माइल रो दूरता थिला ऑप्शन बी होई जो हेरा राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 मसिया रे होइतिला 1930 मसिया रे प्रथम राउंड टेबल एमति सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विषय जदी कथा बा 1931 मसिया देन कोंतु Mahatma Gandhi attend which round table conference? Mahatma Gandhi second round table conference रे attend करिथिले ठीक अछि second round table conference next the Gandhi Irwin Pact was signed in कोंतु गांधी इरविन पैक्ट केउ मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला 1931 मसिया रे गांधी इरविन पैक्ट स्वाक्षरित होइतिला नेक्स्ट द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कहा मध्य रे होइतिला गांधी एवं लॉर्ड इरविन को मध्य रे ऑप्शन ए होई जो राइट आंसर नेक्स्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द कर दिया गला आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट द पुना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन पुना पैक्ट गांधी एवं बी आर अंबेडकर को मध्य रे एही संधि बा एही पैक्ट को स्वाक्षरित करा गला द पुना पैक्ट वाज साइंड इन केउ मसिया रे 1932 मसिया रे पुना पैक्ट को स्वाक्षरित करा जाइतिला द पुना पैक्ट वाज रिलेटेड टू एहा कहा संबंधित थिला एहा टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित सेमानंगो पई ऑप्शन ए होई जो राइट आंसर पुना पैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for कोंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे फेडरल स्ट्रक्चर रो कथा कहबा प्रोविजनल ऑटोनॉमी रो कथा कहबा एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर रो कथा कहबा सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was passed in 1935 रे ही पास करा जाइतला ठीक अछि प्रश्न रे ही उत्तर अछि द एक्ट ऑफ 1935 को पुनी एबोलिश कर दिया गला उच्छेद कर दिया गला काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक अछि 1935 आईन लंदन स्थित जो काउंसिल ऑफ इंडिया को उच्छेद कर दिया गला सो काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक अछि ऑप्शन द एक्ट ऑफ 1935 एबोलिश्ड इथिर जो एबोलिश कर दिया गला द काउंसिल ऑफ इंडिया को ओके या माने या को उच्छेद करी कि जो परामर्शदाता परिषद गठन करा जाइतिला ओके मन रखंतु नेक्स्ट इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर हेल्ड इन 1937 रे 1937 मसिया रे प्रथम प्रादेशिक निर्वाचन अनुष्ठित होइतिला ओके ठीक अछि एथिरे कांग्रेस मध्ये विजय लाभ करिवो सो 1937 हबो नेक्स्ट द कांग्रेस ओन इलेक्शन इन हाउ मेनी प्रोविजन्स इन 1937 रे कांग्रेस निर्वाचन रे जो 8टी प्रदेश रु 11 टी रु 8टी रे से विजय लाभ करिवो 11 टी रु 8टी रे से विजय लाभ करिवो नेक्स्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन्ड इन 1939 बिकॉज़ काहे कि समान रिजाइन करथिले द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन डिक्लेयर्ड इंडिया's participation in World War II without any consultation बिना कोनोसी परामर्श कारणरू माने रिजाइन करि नेबे नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 91 त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1939 मसिया रे त्रिपुरी सेशन हेबो नेक्स्ट द त्रिपुरी सेशन is known for the conflict between काहा मध्य रे एक द्वंद्वर पई बा विवाद पई या कारण थिला गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस was elected president of the congress at
हरिपुरा सेशन रे ऑप्शन ए हबो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस देन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप इन 1939 मसीह से पुणी रिजाइन करदेवे ई सेशन रे सेशन पर नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड फॉरवर्ड ब्लॉक इन देन से 1939 मसीह रे फॉरवर्ड ब्लॉक को गठन करिवे सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट the Pakistan resolution जाकु लाहौर resolution कहा जाए was passed by the Muslim League in 1940 मसीह रे हाकु पास करा जिवो नेक्स्ट the Pakistan resolution was passed at the session held in लाहौर सेशन रे हाकु पास करा जिवो नेक्स्ट the Pakistan resolution demanded कोंतु माने कोन गोटे मुस्लिम स्टेट ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट रो कथा कहा जिवो ए resolution रे Next question number 99. The August offer was made by the British in August offer आसीबो 1940 मसिया रे August offer रो कथा कहबा The August offer was announced by Dominion status ए सब को नै कि कोन तो की अनाउंस करथिले Lord Linlithgow is your right answer. Next question number 101. The Cripps mission came to India in कोन तो Cripps mission भारत आसीथिले 1942 मसिया रे Cripps mission मने रखंतु The Cripps mission was led by Sir which option is वो Sir Stafford Cripps option A is your right answer. Next The Quit India movement was launched in 1942 मसिया रे भारत छाड़ो आंदोलन लॉन्च करा जिवो The Quit India movement was launched after the failure of Cripps mission option A is your right answer. The Quit India movement was also known as August movement and August Kranti. Option C is your right answer. Both A and B. Next, the Quit India resolution was passed at the session held in Quit India जो भारत छाड़ प्रस्ताव को क्यों अधिवेशन रे गृहीत होइतिला एटा बॉम्बे अधिवेशन ऑप्शन A is your right answer. Next, the Quit India resolution was passed on 8 August 1942 मसिया option A is your right answer. The famous slogan "Do or Die" was given by Mahatma Gandhi. यही स्लोगन टी महात्मा गांधी कर थिला. Next, all Congress leaders were arrested after the launch of the Quit India movement on क्यों मसिया रे 9 अगस्त 1942 मसिया रे option B is your right answer. Simla conference was held in कोंतु Simla conference रो कथा कहबा 1945 मसिया रे Simla conference हबो. Next, the Simla conference was called by Lord Revolt. ठीक अछि भारतर Viceroy सेता बेलर Lord Revolt. Next, the cabinet mission plan was announced in cabinet mission 1946 मसिया cabinet mission 1946. The cabinet mission came to India in 1946 हबो option B is your right answer. The cabinet mission consists of how many members? एथरे केते जण मेंबर थिले एथरे 3 जण मेंबर थिले cabinet mission रे. Next, who were the members of the cabinet mission कोंतु ए cabinet mission रे के मेंबर थिले option A Patrick Lawrence Cripps and Alexander. Option A हबो right answer. The cabinet mission plan proposed कोन एटा प्रस्तावित थिला एथरे थिला गोटे a federal union and गोटे provincial groupings. So option C both A and B we can say right. माने जो प्रादेशिक समूह सहित संघीय राष्ट्र फेडरल यूनियन रो कथा कह दिला. नेक्स्ट, the direct action day was observed on 16 अगस्त 1946 is the right answer. Direct action day was announced by एहाको की अनाउंस करथिला मुस्लिम लीग द्वारा एहाको घोषणा करा दैथिला. नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन डे लीड टू यार नेतृत्व के नहीं थिले माने सॉरी लीड टू एटा काहे की एटा हला सृष्टि हला बिकॉज़ जो सांप्रदायिक हिंसा जो ठीक अछि जो कम्युनल वायलेंस जो ऑप्शन ए होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्मड इन कोंतु इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करा गला 1946 मसिया रे इंटरिम गवर्नमेंट
राइट अंतरीण सरकार गठित होइथिला नेक्स्ट द इंटरिम गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू अंतरीण सरकार रो से कौन करथिले लीड करथिले जवाहरलाल नेहरू द मुस्लिम लीग जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 मसिया रे 1946 मसिया इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान आसीबो 1947 जून 3 तारिख ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लास्ट वाइसरॉय के थिले लॉर्ड माउंटबेटन थिले द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 जुलाई 1947 मसिया ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट ऑन कोंतु 1946 डिसेंबर 9 तारिख रे संविधान सभार प्रथम अधिवेशन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 9 डिसेंबर 1946 द फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज के थिले सच्चिदानंद सिन्हा थिले सच्चिदानंद सिन्हा वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the permanent president of the constituent assembly on से परमानेंट प्रेसिडेंट भाबरे 11 डिसेंबर 1946 रे दायित्व ग्रहण करिवे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट द माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान 1947 3 जून 1947 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया the last viceroy of British India Lord Mountbatten option B is your right answer then the Indian Independence Act was passed by the British Parliament on 18 July 1947 option B is your right answer India became independent on 15 August 1947 option B is your right answer then Pakistan came into existence on Pakistan ro गठन 1947 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 नेक्स्ट द रेड क्लिफ लाइन वाज ड्रॉन बाय इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन के को ड्रॉन करथिले माने टानी थिले सिरिल रैडक्लिफ इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल के थिले देखंतु फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विषय जदि कथा बा लॉर्ड माउंटबेटन ही हबो बट जदि प्रश्न आसीबो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया देन सी राजगोपालाचारी ऑप्शन सी हो जो राइट आंसर ओके नेक्स्ट हु इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स into the Indian Union रे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतर लौह मानव नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द accession was mainly associated with कोंतु which option है जो the instrument of the accession माने जो अंतर्भुक्त करा जिवो काकू देशीय राज्य मानकु जो अंतर्भुक्त करा जिवो सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट रो कथा कहबा हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू हैदराबाद को अंतर्भुक्त करा जिवो ऑपरेशन पोलो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट जूनागढ़ वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया आफ्टर ए जूनागढ़ सेते बेले जो रेफरेंडम माने जो जनमत संग्रह जरिया ऑप्शन बी हो इज राइट आंसर द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये अटंती गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 द सेवरेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा दितला 1905 मसिया रे 1905 हो कि 1905 इज योर राइट आंसर हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी को के फाउंड करथिले हेलेना पी ब्लावाटिस्को एंड कर्नेल एचएस
Polket मन रखंतु ऑप्शन बी हो जबो राइट आंसर द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया इज एट यार हेडक्वार्टर केउंटर थिला मुख्यालय थिला यार चेन्नई चेन्नई इज जबो राइट आंसर ऑप्शन बी ओके सो आद्यार चेन्नई रो आद्यार नेक्स्ट द न्यूज़पेपर केसरी वाज स्टार्टेड बाय केसरी न्यूज़पेपर को किया आरंभ करथिले बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर केसरी न्यूज़पेपर मन रखंतु नेक्स्ट यंग इंडिया वाज एडिटेड बाय कोंतु यंग इंडिया रो संपादक किए थिले महात्मा गांधी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द वीकली जर्नल हरिजन वाज स्टार्टेड बाय हरिजन को किया आरंभ करथिले आल्सो महात्मा गांधी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट the newspaper अमृत बाजार पत्रिका was founded by याको के प्रतिष्ठा करथिले शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर who founded the newspaper the Hindu in 1878 रे हिंदू को के प्रतिष्ठा करथिले जी सुब्रमण्यम आयर एंड जो तांकर एसोसिएट्स माने थिले सहयोगी माने थिले ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कोंतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन थिले सेतेबेले लॉर्ड लिटन हु फाउंडेड द गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 मसिया रे नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी रो हेडक्वार्टर केउठारे थिला San Francisco. Option C is your right answer. Next, the revolutionary organization अभिनव भारत was founded by यह को प्रतिष्ठा करथिले बीडी सावरकर ऑप्शन ए हबो राइट आंसर नेक्स्ट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त यू बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों मसिया रे 1929 मसिया रे 1929 मसिया इज राइट आंसर भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वेर एग्जीक्यूटेड ऑन से मानु फांसी दिया जाइतला 1931 सो 1931 क्यों मसिया माने क्यों दिन 23 मार्च 1931 ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर चंद्रशेखर आजाद अटेन्ड चंद्रशेखर आजाद कर जो शहीद होइथिले से अलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क रे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 ट्राई करंतु द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्मड इन वेरी इंपोर्टेंट 1928 मसिया रे को गठन करा दैतिला ऑप्शन सी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 हु assassinated ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सैंडर्स ठीक अछि ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स को किया हत्या करथिले भगत सिंह एवं तांकर सहयोगी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 उधम सिंह assassinated माइकल वार्डियन को ओके माइकल वार्डियन को इन लंडन रे लंडन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट खुदीराम बोस वाज एसोसिएटेड विद द खुदीराम बोस जो मुजफ्फर रे जो बोमा केस को नेकी से जड़ित थिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 ट्राई करंतु द चित्तगांव जो आर्मोरी रेड हबो शस्त्रागार को जो आक्रमण करा जिवो was lead by सूर्य सेन यार नेतृत्व नेबे चित्तगांव मन रखंतु सूर्य सेन को रिलेट करंतु सूर्य सेन was popularly known as सूर्य सेन कोन थिले सूर्य सेन was popularly known as से जने शिक्षक थिले ओके शिक्षक थिले सो तांकू मास्टर डा इज राइट आंसर पॉपुलरली नोन एज मास्टर डा नेक्स्ट द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय याको रीऑर्गेनाइज करा दितला सुभाष चंद्र बोस को द्वारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर द फेमस स्लोगन जय हिंद वाज पॉपुलराइज्ड बाय
Subhash Chandra Bose. Option C is your right answer. The INA Women's Regiment was named Kundu Rani of कौन से Rani of the Jhansi Regiment. Option C who is your right answer. Next question number 166. Who commanded the Rani of Jhansi Regiment? Captain Rani. Captain यार किए माने यार कमांड किए नहीं थिले कैप्टन लक्ष्मी Sahagal. Option C is your right answer. Okay. Next question number 167. The Royal Indian Navy mutiny took place. कुहतु Royal Indian जो नौसेनार विद्रोह हब took place in 1946 मसीहा 1946 मसीहा is your right answer. The Royal Indian Navy mutiny begin at ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବମ୍ବେରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ Royal Indian Navy ର mutiny जो विद्रोहटा. Next question number 169. The revolt of 1857 has been described as the first war of the Indian independence by का द्वारा डी सावरकर को द्वारा डी सावरकर मन रखंतु. Next question number 170. The book India Wins Freedom was written by Maulana Abul Kalam Azad. Option B is your right answer. Next, the book Discovery of India was written by Jawaharlal Nehru. Option B is your right answer. Next, the autobiography My Experiment with Truth, Mahatma Gandhi, which was right answer. The book Hind Swaraj was written by, this is also Hind Swaraj को लिखिथिले महात्मा गांधी ही लिखिथिले. Option B is your right answer. Next, the book Glimpse of the World History was written by Glimpse of the World History रो लेखक किए Jawaharlal Nehru. Option C, Jawaharlal Nehru is your right answer. The famous slogan Inqilab Zindabad was popularized by Bhagat Singh. Option B is your right answer. Who gave the slogan Dilli Chalo? Dilli Chalo slogan किए दिथिले Subhash Chandra Bose दिथिले. Next, the first session of the Indian National Congress held outside India was India बाहरे Rangoon रे होइतिला. Rangoon is your right answer. The only session of the Indian National Congress presided over by Mahatma Gandhi अध्यक्षता करिथिबा सेशन टी very important 1924 मसिया रे जो बेलगांव सेशन थिला बेलगांव सेशन. Next, the Karachi session 1931 मसिया रो Congress is remembered for the adopting the resolution on Karachi session. This is for fundamental rights and national economic program. Option B is your right answer. Next, question number 180. Who presided over the Karachi session of the Indian National Congress? यार अध्यक्षता किए करथिले? यार अध्यक्षता करथिले Karachi session 1931 वल्लभ भाई पटेल. Option B is your right answer. Next, the Phajipur session 1936 of the Congress was significant because it was कौन first session थिला. This is village रे थिला ए सेशन टी 1936 Phajipur session very important. Which act ended the rule of East India Company in India? क्यों एक्ट जरिया रे 1800 ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 भारत सरकार कर जो आई. ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नेक्स्ट, the Ilbot bill controversy occurred during the tenure of Ilbot bill Lord Ripon मन रखंतु. Lord Ripon is your right answer. सेमिति vernacular press act was replaced by का द्वारा Lord Ripon is your right answer. 1882 Lord Ripon. Next, question number 185. Hunter Commission was 1882 Hunter Commission education को नहीं कि Hunter Commission बसिबो. Next, who is known as the Grand Old Man of India? Dada Bhai Naroji, Grand Old Man of India. The title Lokmanya is associated with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Option B is your right answer. पंजाब केसरी भाବରେ किए जଣା जानती? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय. Option B is your right answer. मन रखंतु very important. देशबंधु टाइटल देशबंधु उपाधि काकु दिया जाइतिला? चित्तरंजन दास. Option A चित्तरंजन दास is your right answer.
फ्रंटियर गांधी भाव किए जाना जाती फ्रंटियर गांधी भाव खान अब्दुल गफर खान ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को प्रदान करा जायतिला सरोजिनी नायडू हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा करथिले मदन मोहन मदन मोहन मालव्य मदन मोहन मालव्य नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डेवलप्ड फ्रॉम द कहतु अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय आनुष्ठानिक भाव में जो यही अनुष्ठान को जो विकसित होइतिला सेते बेले फ्रॉम द अलीगढ़ व्हिच ऑप्शन है जो एटा टी देखिबे आपण आई थिंक प्रथम थिला मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज देन एटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रे डेवलप हेतिला एथिरु एथिगु ऑप्शन ए ही हो आई थिंक राइट आंसर देखिबे टिके एटा हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज याको के प्रतिष्ठा करथिले सैयद अहमद खान ऑप्शन बी हो इज राइट आंसर नेक्स्ट which viceroy is known as the father of local self-government in India? Lord Ripon, very very important mane rakhantu. Next, the first factory act in British India was passed in प्रथम फैक्ट्री आइन को 1881 रे पास करा जाइतला. Next, which movement is associated with the slogan do or die? भारत छाड़ो आंदोलन. So quit India movement is the right answer. Next, who was the first Indian woman president of the Indian National Congress? First Indian woman Ani Besant is boki option B. Ani Besant is your right answer. Sarojini Naidu become the first Indian woman president of the Indian National Congress in option 198. Who was the first Indian woman president of the Indian National Congress? First Indian woman Sarojini Naidu ना Sarojini Naidu. Ani Besant कौन थिले जने ब्रिटिश महिला थिले. So option A होगा right answer. Next, Sarojini Naidu became the first Indian woman president of the Indian National Congress in 1925. 1925 option B is the right answer. Next आज last question number 200 try करूँ. Which of the following books was written by बाल गंगाधर तिलक? गीता रहस्य से रचना करिथिले. आउट ऑफ 200 आपण केतोटी प्रश्न सठिक भाव में करि परिछंती आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे. आज रो क्लास रे जहां जहां सब मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस अछि हम प्रैक्टिस करिछंती. पुनी थरे नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो. क्लास टी को बहु मात्रा रे लाइक एंड शेयर करंतु. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आपण एही चैनल रो जॉइन बटन रे जॉइन करी सपोर्ट मध्य करि परिबे. आई होप ए क्लास टी आपण मानको पई बहुत यूजफुल हबो. Thanks for watching this class.